Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about molar mass of a substance. So first of all, how can you define it? So molar mass can be defined as the mass in grams of 1 mole of a substance, which means कि आपके पास 1 mole of substance में कितना mass present है, and that mass should be in grams. Okay, now you can also define it in another way, which is molar mass is the atomic mass of an atom or the sum of atomic masses of all the atoms in a molecule, an ion or a formula unit in grams. अगर आपके पास सब्सटेंस सिर्फ वन एटम पर कंपोज है, सो जो उसका एटॉमिक मास होगा वही आपके पास उसका मोलर मास भी है. बट इफ़ अ सब्सटेंस इज composed of multiple atoms, then you have to sum up all their atomic masses. Okay, then unit. So its unit is gram per mole, or it is expressed in gram per mole. Now coming towards the calculation of molar mass, so there are certain steps, 3 steps from which you can calculate the molar mass of any substance. The first one step is you have to write down the formula of the substance which is given to you, just like we have sulfuric acid. So its chemical formula is H2SO4. So the next step is you have to work out on its molecular mass. आपने molecular mass find करना है, वो आपके पास AMU में आ जाएगा. So the third step, next step is just आपने उस AMU mass को ग्राम पर मोल में convert करना है, and that will be your molar mass. Okay, now there is a question: calculate the molar mass of sulfuric acid and then the formula mass of hydrated copper sulfate. Now first we are going to calculate the molar mass of sulfuric acid. So हमने क्या डिस्कस किया था, इसका फर्स्ट स्टेप है कि you have to write the chemical formula. So chemical formula of sulfuric acid is H2SO4. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास आप कैसे फाइंड करते हो? आपने जितने भी आपके पास एटम्स है इस सब्सटेंस में, आपने उन सब का सम लेना है उनके एटॉमिक मासेस का. Sulfuric acid is composed of 2 atoms of hydrogen, 1 atom of sulfur and 4 atoms of oxygen. So you have to multiply the atomic mass of hydrogen with 2, sulfur with 1 and oxygen with 4. You know that atomic mass of hydrogen is 1, sulfur is 32 and oxygen is 4. Then first of all आप इसको multiply करो, then add करो, and you will get the molecular mass. आप इनको ऐड करोगे सबको तो आपके पास 98 AMU आ जाएगा. देन हमने नेक्स्ट स्टेप डिस्कस किया था, थर्ड वन, कि आपने इस AMU मास को जस्ट ग्राम पर मोल में कन्वर्ट करना है, एंड दैट विल बी योर मोलर मास. सो मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज़ 98 grams per mole. Okay, next example is you have to calculate the formula mass of hydrated copper sulfate. First step, you have to write down the formula of hydrated copper sulfate, which is CuSO4 into 5 molecules of water. Now second step, आपने सिर्फ फार्मूला मास तक ही कैलकुलेट करना है, मोलर मास नहीं मांगा, तो इसका आंसर आपके पास AMU में आएगा. सो फार्मूला मास कैसे फाइंड करना है? यू हैव टू सम अप the atomic masses of all the atoms constituting the hydrated copper sulfate. So atomic mass of copper is 64, sulfur is 32, oxygen 16, hydrogen 1 and then oxygen 16. आपने इन सब को इनके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करना है, देन ऐड करना है, यू विल गेट द आंसर 250 AMU. इसको आपने ग्राम पर मोल में नहीं कन्वर्ट करना क्योंकि आपसे फार्मूला मास ही मांगा था. अगर मोलर मास मांगा हो, देन यू हैव टू गिव योर आंसर in grams per mole. Now there is assignment for you. You have to calculate the molar mass of sodium hydroxide and then give me your answers in comment section.